हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू Eguru Learning। मैं सुमित मेहता। आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2 क्लास 12th इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के सॉल्यूशंस देखेंगे। सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑन आवर स्क्रीन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ cos inverse cos 13 pi by 6। So to start the question, we need to find out the value of cos inverse cos 13 pi by 6. So you know that if it is cos inverse cos theta is equals to theta, this is only possible when my theta lies in the range 0 से pi closed interval, which is the principal value branch of cos inverse x का ये क्या है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अब ये x का प्रिंसिपल वैल्यू कोस इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, तब भी हम ये लिख सकते हैं। बट हमारे पास क्या दिया हुआ है 13 पाई बाय 6। अब जो 13 पाई बाय 6 है वो तो 0 से पाई की रेंज में आ नहीं रहा है, तो अब हमें इस 13 पाई बाय 6 को 0 to पाई में कैसे ला सकते हैं। आई कैन राइट 13 पाई बाय 6 एज 2 पाई प्लस पाई बाय 6। So this is cos inverse cos 2 pi plus theta क्या होता है बच्चों? This is cos theta only. Okay. So now my this theta lies in the range 0 to pi. So at this step I can write this as equals to pi by 6 only. Once it is in the range of 0 to pi, then you can write directly as theta, otherwise you cannot. Okay, and this is the principal value branch. So the answer to this question becomes pi by 6. Now let's quickly move to question number 2. So student, here is question number 2 on our screen, which states that क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan ऑफ 7 pi by 6। तो अब हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। अब दिया क्या है tan इनवर्स tan 7 pi by 6। So now we know that tan inverse tan theta will become theta only if my theta lies in the interval minus pi by 2 to pi by 2 open interval, because this is the principal value branch of tan inverse theta. Okay, so now to make this theta in the range this, what I can do is I can write tan inverse tan 7 pi by 6 as pi plus pi by 6. Okay, so tan pi plus pi by 6 is 7 pi by 6, and in the third quadrant, this is in the third quadrant, so I can write tan pi plus theta as tan of theta. So now this pi by 6 becomes in the range of minus pi by 2 to pi by 2. अब हम इसको डायरेक्टली अपना सीधा सीधा आंसर लिख सकते हैं। So the answer becomes pi by 6 again. So the answer to this question is pi by 6. The value of tan inverse tan 7 pi by 6 is pi by 6. Now let's move to question number 3. So student, here is question number 3 on our screen, in which we need to prove that 2 times sin inverse 3 by 5 is equals to tan inverse 24 by 7. Now let's start with LHS ले लेते हैं हम पहले। So यहाँ पे हमें LHS में है 2 times sin inverse 3 by 5. ओके, तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ लेट sin inverse 3 by 5 is equals to x. So sin x कितना हो जाएगा 3 by 5। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली tan x लिख सकता हूँ। आई होप दैट यू गाइज कैन फॉलो दिस, कि यहाँ से tan x मेरा सीधा सीधा 3 by 4 हो जाएगा। सो नाउ और x कितना हो जाएगा यहाँ से tan इनवर्स 3 by 4।
So this is equals to tan inverse 3 by 4. So now my question becomes 2 tan inverse 3 by 4. So we know a formula that 2 tan inverse x is equals to tan inverse 2x upon 1 minus x square. ये हमें फॉर्मूला पता है. हमें एनसीईआरटी में जब भी सॉल्यूशन लिखने हैं या बोर्ड में सॉल्यूशंस लिखने हैं तो फॉर्मूलाज जो आप यूज़ कर रहे हो उसको ज़रूर लिखना है कि कौन सा फॉर्मूला आपने यूज़ किया है. सो दिस इज 3 by 4 होल स्क्वायर. हेयर यहाँ पे हम 2 नहीं ले आएंगे. सो दिस इज tan इनवर्स 2 पे चला जाएगा. ये ऊपर बचा मेरे पास 3 by 2 और नीचे क्या बच रहा है 16 एलसीएम 7 by 16. सो दिस इज tan इनवर्स 3 by 2 into 16 upon 7. So this is tan inverse 24 by 7 itself, which is equals to RHS. तो हमारा ये सॉल्यूशन प्रूव हो गया है. LHS is equals to RHS. ओके स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में किसी भी टाइप का डाउट आ रहा है, इफ़ यू आर फेसिंग एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन, देन प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें एंड आई विल रिप्लाई टू यू गाइज देयर. ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. So student, here is question number 4 on our screen, which states that prove sin inverse 8 by 17 plus sin inverse 3 by 5 is equals to tan inverse 77 by 36. Okay, now let's start with LHS. LHS से स्टार्ट कर लेते हैं. हम पहले ये जो दोनों टर्म्स है ना, इसको लिख लेते हैं टर्म 1, दिस इज टर्म 2. टर्म 1 एंड टर्म 2 को हम tan इनवर्स की फॉर्म में ले आते हैं और उसके बाद tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. ओके, सो साइन इनवर्स 8 by 17 इज इक्वल्स टू x मान लेते हैं इसको. तो यहाँ से साइन x कितना हो जाएगा 8 by 17. अब मुझे यहाँ से कोस x कितना आ जाएगा, दिस इज 1 minus 8 by 17 whole square. So this is 289 minus 64 by 289. So this is 225. This is 15 by 17. Okay, so I can write tan of x as 8 by 15 और यहाँ से मेरा x आ जाएगा tan इनवर्स 8 by 15. तो हमने पहली टर्म को तो tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया है और दूसरी टर्म दैट इज साइन इनवर्स 3 by 5 इक्वल्स टू लेट सपोज y. ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व किया है एंड दिस इज इक्वलेंट टू tan इनवर्स 3 by 4. तो अब हमारे पास टर्म 1 एंड टर्म 2 जो है tan इनवर्स की फॉर्म में आ चुकी है. नाउ लेट्स ऐड दिस. So instead of writing sin inverse 8 by 17, I am writing tan inverse 8 by 15 plus tan inverse 3 by 4. This is our LHS part. Okay, now applying the formula which is tan inverse A plus B. तो यहाँ पे मैं formula लिख देता हूँ. tan inverse A plus tan inverse B is equals to tan inverse A plus B upon 1 minus AB. Okay, so this is 8 by 15 plus 3 by 4 upon 1 minus 8 by 15 into 3 by 4. So this is tan inverse. न्यूमरेटर में एलसीएम कितना आ जाएगा 60. So this is 32 plus 45. डिनोमिनेटर में भी एलसीएम 60 लेके 60 minus 24. So this becomes tan inverse 32 plus 45 is 77 upon
60 minus 24 is 36, and which is equals to RHS. So hence our question number 4 completes. I hope आप सबको ये समझ आया होगा. Now let's quickly move to question number 5. So student, here is question number 5 on our screen, in which we need to prove that cos inverse 4 by 5 plus cos inverse 12 by 13 is equals to cos inverse 33 by 65. So now let's start with LHS. LHS से start करते हैं. LHS. So वही हमारा तरीका, हम पहले cos inverse 4 by 5 को x मान के इसको tan inverse की फॉर्म में लिख लेंगे. Now I hope अब आप सब जानते होंगे ये tan inverse में कितना हो जाएगा. This is equals to tan inverse 3 by 4. Okay, and cos inverse 12 by 13, let's suppose this is equals to y, और ये tan inverse में ये कितना हो जाएगा 5 by 12. And if you don't know how to find out, please see my previous videos on how to convert cos inverse or sin inverse to tan inverse. Okay, so this is equals to tan inverse 5 by 12. Now let's add both these. So tan inverse 3 by 4 plus tan inverse 5 by 12. Okay, applying the formula. कौन सा फॉर्मूला जो अभी तक हम लगा रहे हैं, पहले भी लगाया है. tan inverse A plus tan inverse B is equals to tan inverse A plus B upon 1 minus AB. So this is tan inverse 3 by 4 plus 5 by 12 upon 1 minus 3 by 4 into 5 by 12. So this is tan inverse, LCM क्या ले लेते हैं ऊपर 12. So 9 plus 5 upon so here it is multiplying 48 minus 15 33 by 48. So this becomes tan inverse 14 by 12 into 48 by 33. So this is 4. So this is tan inverse 56 by 33. Now हमारा जो LHS आ गया, that is in the form of tan inverse 56 by 33. अब हम क्या करते हैं, RHS को भी which is in cos inverse 33 by 65 इसको tan inverse में कन्वर्ट करके देख लेते हैं. So जो हमारा RHS है, this is cos inverse 33 by 65. Now let's suppose this is equals to t. So cos t कितना हो जाएगा 33 by 65. तो अब हम cos बनाते देख लेते हैं. Cos क्या होता है, base by hypotenuse. So this is 33, this is 65. So we need to find this perpendicular. So ये perpendicular कितना हो जाएगा 65 square minus 33 square. 65 का स्क्वायर कितना होता है 4225. एंड 33 के स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं अगर आपको स्क्वायर याद नहीं है तो. अदरवाइज आपको स्क्वायर याद है तो दिस वुड बी 1089. I think this is 999. So this is 1089. So this becomes 1089. 6. ये कितना बचा, 11 minus 8 is 3. This is 1 and this is 3. So एक इसका स्क्वायर हो जाएगा 3136. This becomes square of 56. 56 is 25 plus 3. This is the square of 56. So P now equals to 56. Okay. Now let's make some space. तो हमने अब थोड़ा सा स्पेस बना लिया है इधर. अब P आ गया हमारे पास. So this is tan of t कितना हो जाएगा, इसे
perpendicular by hypotenuse. This is 56 by 33. So T is tan inverse 56 by 33. So RHS भी जो हमारा आ गया है tan inverse 56 by 33, which is equivalent to LHS. So hence it is proved that LHS equals to RHS. With this our question number 5 completes. Now let's move to question number 6. So student, here is question number 6 on our screen, in which we need to prove cos inverse 12 by 13 plus sin inverse 3 by 5 is equals to sin inverse 56 by 65. Okay, so now let's start with LHS. First, see cos inverse 12 by 13 is equals to x. So directly I can write, because in previous question we have converted this, so now I can write this as tan inverse 5 by 12, and sin inverse 3 by 5, let's say this is equals to y in tan inverse, this is tan inverse 3 by 4. अब हम दोनों की ये वैल्यूज सीधी सीधी लिख देते हैं, tan inverse 3 by 4. सो tan इनवर्स a प्लस b का फॉर्मूला लगाया है, ये फॉर्मूला हम पहले भी 2-3 बार लिख चुके हैं. सो आई होप अब आपको याद हो गया होगा. सो दिस इज tan इनवर्स 12 LCM, this is 4, 12, 17 by 12 upon 48 minus 15 is 33 by 48. So this is equivalent to tan inverse tan inverse 5 plus 9 plus this is 14. So this is 56 by 33. तो ये tan inverse 56 by 33 हो गया है. Now we need to convert the RHS part in tan inverse form. So sin inverse 56 by 65, let's say this is equals to t. So sin t कितना हो जाएगा 56 by 65. So this is 65, this is 56. So this would become 33. पिछले क्वेश्चन में ही हमने ये पाइथागोरस सॉल्व किया है, तो यहाँ से tan इनवर्स दिस वुड बिकम 56 बाय 33. हेंस हमारा जो LHS है दैट इज इक्वल्स टू RHS. तो ये हमारा ये क्वेश्चन भी प्रूव हो गया है. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. सो स्टूडेंट, हियर इज क्वेश्चन नंबर 7 ऑन आवर स्क्रीन. अब इसमें क्या करना है, वी नीड टू प्रूव tan inverse 63 by 16 is equals to sin inverse 5 by 13 plus cos inverse 3 by 5. तो अब हम इस क्वेश्चन में पहले RHS लेके चलते हैं, मीन्स राइट हैंड साइड को पहले लिख लेते हैं. सो दिस इज sin inverse 5 by 13 प्लस cos inverse 3 by 5. अब हमने इतने कन्वर्जन कर लिए tan में, तो मैं डायरेक्टली इस पार्ट को लिख सकता हूँ. दिस इज tan इनवर्स 5 बाई 12. अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो प्रीवियस वीडियो देखिए आप, एक्सरसाइज 2.2 में हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कन्वर्ट किए हैं, और ये बन जाएगा tan इनवर्स 4 बाई 3. सो यूजिंग द फॉर्मूला tan इनवर्स a प्लस b वाला, सो दिस इज 5 बाई 12 प्लस 4 बाई 3 अपॉन 1 minus 5 by 12 into 4 by 3. So this would become tan inverse 12 LCM in the numerator 5 plus 16 upon this is 36 minus 20, 16 by 36. So this is tan inverse 21 by 12 into 36 by 16. So this is 3.
So this becomes tan inverse 63 by 16, which is equivalent to LHS. So hence question number 7 is proved. Let's move to question number 8. Question number 8 देखते हैं फटाफट. So student, here is question number 8 in which हमें ये प्रूफ करना है कि पहले tan inverse 1 by 5 plus tan inverse 1 by 7 plus tan inverse 1 by 3 and plus tan inverse 1 by 8 is equivalent to this pi by 4. तो अब हमें LHS लेके चलते हैं. LHS में दो टर्म पे tan inverse लगाएंगे. दिस इज tan inverse 1 by 5 plus tan inverse 1 by 7 plus tan inverse 1 by 3 plus tan inverse 1 by 8. तो पहले इन दो टर्म्स पे tan inverse A plus tan inverse B का फॉर्मूला लगाते हैं एंड सिमिलरली फिर इस पे लगाते हैं. सो दिस इज tan inverse 1 by 5 plus 1 by 7 upon 1 minus 1 by 5 into 1 by 7 plus tan inverse 1 by 3 plus 1 by 8 upon 1 minus 1 by 3 into 1 by 8. So this is tan inverse 12 upon 35. This is 35 minus 1, 34 by 35 plus tan inverse, this is 11 by 24 upon 23 by 24. So this becomes tan inverse 12 by 34. 12 by 34 को हम 6 by 17 लिख लेते हैं and this is tan inverse 11 by 23. अब इन दोनों टर्म्स में हम फिर से tan inverse A plus tan inverse B वाला फॉर्मूला लगाते हैं. So this is tan inverse 6 by 17 plus 11 by 23 upon 1 minus 6 by 17 into 11 by 23. So as we know कि डिनोमिनेटर जितना भी एलसीएम आएगा वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा. So 23 into 6 is 138 plus 17 into 11 is 187 upon 23 into 17 is 391 minus 66. So this is tan inverse ऊपर कितना बन जाएगा 3 to 5 and denominator में भी 3 to 5. So this goes cancel out. This is tan inverse 1 which is equals to pi by 4. Okay student, and this is equivalent to RHS जो हमें प्रूफ करना था. तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 to 8 देख लिए हैं स्टूडेंट्स, एंड इस वीडियो का मैं पार्ट नंबर 2 बनाऊंगा जिसमें रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2 हम कवर करेंगे. एंड इफ यू आर लाइकिंग द वीडियोस प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल ईगुरु लर्निंग. एंड अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें. थैंक यू स्टूडेंट्स, हैप्पी लर्निंग.